नमस्कार, मैं आप सभी का इग्नू से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हेमा पंत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सेवा प्रभाग से आपको इस ज्ञान दर्शन के सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। और ये सत्र जो है प्रति सप्ताह मंगलवार के दिन हमारे सभी भावी विद्यार्थी या जो इग्नू में जो शिक्षार्थी अभी एनरोल्ड हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कि क्षेत्रीय सेवा प्रभाग में या हमारे दिल्ली नोएडा में स्थित जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वहाँ पे जो हमारे एकेडमिक्स हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम दिया जाता है। और इस कार्यक्रम में हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू कहते हैं, इग्नू में जो भी विद्यार्थियों को सुविधाएं सहायता उपलब्ध कराई जाती है विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्रकार के आयोजनों से, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा होती है। तो हम अपने सभी दर्शकों से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उनसे आप उन पे डायल करके आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली on the telephone through those numbers, and we will be very happy to answer, at least we will try to answer your questions, your queries. आपकी जो भी जिज्ञासा है उनका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपसे बातचीत करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो आज की जो चर्चा है या जो सत्र है, ये मंगलवार को हर मंगलवार को हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है इसको हमने नाम दिया है ओपन सेशन ऑन स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, यानी ये एक कहना चाहिए एक खुला मंच है जिसमें आप विद्यार्थी सहायता सेवा या स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में विभिन्न आयाम जो हैं, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लर्नर सपोर्ट सर्विसेज, उसके बारे में बातचीत करते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो इस चर्चा में मेरे साथ आज शामिल हैं मेरी कोलीग डॉक्टर अंजना, जो कि असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं रीजनल सेंटर नोएडा, यानी जो क्षेत्रीय केंद्र हमारा नोएडा में है वहाँ पर ये कार्यरत हैं और बहुत अनुभवी हैं और बहुत विद्यार्थी सहायता सेवा में ये सक्षम रूप से विद्यार्थियों की मदद में प्रयत्नशील हैं क्षेत्रीय केंद्र से। तो हम आज अपने चर्चा की शुरुआत करेंगे और मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो इस सेशन में before I request my colleague Dr. Anjana to talk about the specifics of learner support services and how we provide such services to our learners and what are the aspects which the prospective learners should know about the different aspects of IGNOU or different programs of IGNOU, हम जल्दी से डॉक्टर अंजना प्रारंभ में ही एक अच्छा समाचार अपने सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक हैं जो इग्नू से कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं या अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए सुअवसर यूनिवर्सिटी प्रदान कर रही है एडमिशन का, क्योंकि आप सभी जानते हैं इग्नू में 2 वर्ष में 2 बार एडमिशन होते हैं। द एडमिशंस are provided twice by the university, once in January and in July. So this is about the January 2023 session, and Dr. Anjana, if you could tell them what is the good news that we have for them, for our listeners and viewers, about the extension of the date of admission. So till when can they take admission in various programs of IGNOU? First of all, thank you very much, ma'am, for the introduction and informing our students about the fresh admission of January 2023 session. जैसा कि मैम ने हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताया कि जो जनवरी 2023 सत्र है उसमें प्रवेश की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा करके विश्वविद्यालय ने 31 मार्च 2023 कर दिया है। और जो विद्यार्थी हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे इस जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। और
ये फैसिलिटी अभी सर्टिफिकेट और सेमेस्टर प्रोग्राम के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन बाकी जितने एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल या उससे ज़्यादा का है, उनमें अभी ये प्रोसेस चल रहा है। और अभी इसको विश्वविद्यालय ने 27 मार्च पहले इसको रखा था, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2023 कर दिया है। और ये री रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक्सटेंड, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने लेट्स से 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम जैसे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है या 3 ईयर डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, उसमें उनको री रजिस्टर कराना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये तिथि जो सुविधा है वो 31 मार्च तक इसमें अपना री रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। तो ये सुविधा की जानकारी हम आपको देना चाहते थे। और दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ, थैंक यू डॉक्टर रंजना, जो आपने ये लास्ट डेट के बारे में जानकारी दी। तो अभी आपके पास वक्त है, टाइम है, आप यू कैन fulfill your dreams and ambitions of pursuing a program of your choice, because IGNOU offers a wide range of programs at various levels. Of course, you have missed this opportunity for the certificate or for the semester based programs like MCA, BCA, MBA. However, for the very soon the July session admissions will be announced. You can wait till then if you are aspiring for the 6-month duration programs. But for the other programs, that is the diploma, PG diploma, and for the master's degree, undergraduate degree, you can take admission, and they are across 21. We have 21 schools of studies which are offering a wide range of programs in various disciplines. तो आप उनमें अपना प्रवेश ले सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे that the entire information is available on the IGNOU website, which is a very dynamic website which has detailed information on any aspect about the study of IGNOU that you wish to know about. That so important is that you should know the IGNOU website. You should go through that. That is www.ignou.ac.in, and my colleague Dr. Anjana will just share with you how you can access and navigate the IGNOU website. तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहें, जैसा आपको बताया कि आपको प्रवेश लेना है, तो अब अभी टाइम है and you can take admission. So you should also know that the entire process of admission is online. IGNOU में किसी भी कार्यक्रम में आप प्रवेश लेना चाहेंगे तो ये आपको ऑनलाइन ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो हम अब प्रारंभ करते हैं आपकी जानकारी के लिए कि इग्नू में किस प्रकार से डॉक्टर अंजना, हाउ डज द लर्नर हु इज इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एन इग्नू प्रोग्राम, हाउ विल दे गो अबाउट, आई मीन क्या उसको तैयारी अपने पास रखनी है, कार्यक्रम का चयन वो कहाँ से करेगा, और उसकी जानकारी उसको कैसे उपलब्ध होगी। और दूसरी बात, अगर वो प्रवेश लेना चाहता है, हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो वो किस तरह से है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको डिस्प्ले कर दें अपने स्क्रीन से। जी मैम, जो आपने ये प्रश्न किया है कि हम कैसे हमारे विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं इग्नू के जो अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इग्नू में 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से हम प्रोग्राम ऑफर करते हैं, और दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं। और आई थिंक यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी रहती है। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग and online, these are the 2 different modes in which we are offering our programs. ODL mode से हम लगभग 250 programs there are on offer, and online mode में we have around 44 programs, 43 or 44 programs which are on offer. In fact, in the last 2 years IGNOU has launched almost 43 programs. So yes, you are very rightly, you said how what is the process in both these modes. What does the learner supposed to know, the prospective learner? Yeah. तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं हमारे ODL लर्नर्स जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से इग्नू से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। वी हैव अवर वेबसाइट www.ignou.ac.in। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने सर्कल किया हुआ है। एंड इफ़ वी गो टू रजिस्टर ऑनलाइन, तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एंड वी फाइंड फ्रेश एडमिशन ओवर हेयर। इफ़ वी क्लिक ऑन दिस फ्रेश एडमिशन, वी गो टू इग्नू समर्थ पोर्टल। Directly also we can write ignuadmission.samarth.edu.in and we can go to this portal. Otherwise through IGNOU main website, जिसका लिंक मैंने अभी आपको बताया, और रजिस्टर ऑनलाइन फ्रेश एडमिशन, उससे भी हम इस एडमिशन पोर्टल पर
जा सकते हैं और एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि हम कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वी फर्स्ट नीड टू असर्टेन आवर एलिजिबिलिटी कि हम उसमें एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, और उस प्रोग्राम के बारे में वी ऑल्सो वांट टू नो द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो उन प्रोग्राम जो ओडीएल मोड से ऑफ़र किए जा रहे हैं, उन सभी प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम इस प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल उस पर मैंने क्लिक किया है एंड वी फाइंड द नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स ओवर हेयर. ये सिर्फ फर्स्ट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है. इफ़ यू स्क्रॉल डाउन वी फाइंड देयर आर नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स. जैसा कि मैम ने अभी बताया कि लगभग 250 प्रोग्राम है हमारे जो हम ओडीएल मोड से ऑफ़र कर रहे हैं. तो ये स्क्रीन पर वी कैन फाइंड द प्रोग्राम्स, और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं देन वी फाइंड कि ये किस तरह का प्रोग्राम है. इफ़ इट्स अ डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम और अ डिग्री लेवल प्रोग्राम, देन कौन सा स्कूल है. जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे 21 स्कूल ऑफ स्टडीज़ आर देयर इन इग्नू. तो कौन सा स्कूल है जो इसको ऑफ़र कर रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है, किस मीडियम में इसको ऑफ़र किया जा रहा है, एंड अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स. And then if we move forward, we find the eligibility criteria. That is, for this particular program, it's 10+2 or its equivalent. Then we find the fee structure, who's the program coordinator, what all are the course codes that are there in this particular program. And then we also find the details about the regional centers and the study centers where this program is being offered. So likewise, we can find the details about a particular program. And now we come back to the home page of this Samarth portal, जहाँ से कि हमें एडमिशन का जो वास्तविक प्रक्रिया है जो जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं. तो एक बार हमें प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, देन वी गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वी गो टू दिस क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन. वी क्लिक ओवर हेयर, और जो ये विंडो ओपन होता है वी हैव टू फिल द यूज़र नेम, देन एप्लीकेंट्स फुल नेम. all these details need to be filled by the students, and the important point that needs to be taken into consideration is that the student should have its active email address and the mobile number, because I think this is a very important point, Yes, ma'am. Dr. Anjana, because the students have to be very sure about their own contact details which they are filling, and that should be those details in which they will be continuously contacting with the university. Because ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वही जो अभी अंजना मैडम बता रही थी कि इस एडमिशन फॉर्म में आप वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे जिसको आप लगातार अपने अध्ययन काल में इग्नू में उसका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आपको सारी सूचना जो विश्वविद्यालय भेजेगा, चाहे वो मटेरियल के बारे में हो, चाहे आपका कन्फर्मेशन हो, आई कार्ड हो, या एग्ज़ाम का आपका हॉल टिकट संबंधी सूचना हो, वगैरह वगैरह, वो सारी सूचनाएं विश्वविद्यालय आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही भेजेगा. एंड इन केस दे चेंज इट, कैन दे डू दैट? I think they can Yes, also yes, they change can. the number. Then what is the alternative which the student has? I think that is also very important for you to understand. Yeah. if they change their email ID or the mobile number, it's essential that they get it updated through the regional center. वो regional center को contact करें through email, through letter. They communicate this to their particular regional center and get the email ID and the mobile number updated, so that the information whatever is relevant to those students, university can communicate to them from Yes. time to time. So that is important. So shall we come back to the Yes, our please, let's go ahead. registration process? Then we move ahead. Just for the convenience of the prospective students, what IGNOU has done is that they have prepared 2 videos, one in Hindi language and the other one is English language. तो कैसे online application form को fill करना है, they can watch the video also through this particular window which is there on the Samarth portal. कुछ instructions that need to be taken into कंसिडरेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें पहले से तैयार करके रखना होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसमें एक तो है कि स्टूडेंट का अपना स्कैन फोटोग्राफ, दे हैव टू कीप इट रेडी विद दैम, and that should be clear, because at times what we find is that the documents or the photograph or the signature that is not clearly visible when they apply for admission. Then in that case it's difficult to process their application, and there are certain discrepancies that are generated by the university. So it's better that they keep their clearly scanned copies of photograph, signature, age proof, the educational qualification document,
to ascertain that they fulfill the eligibility criteria. They have to keep it ready. Apart from that, they have to keep the experience certificate ready if they are applying for such a program where there is an The requirement requirement of experience. Then if they want to claim exemption for fee, then they have to upload the category certificate also if they belong to SC or ST category. And there is a specific dimension also. When like photograph is there, they have to keep it in the size of 100 kb, less than 100 kb. And for different documents, there is a different criteria. Maybe for age proof, there is 200 kb maximum limit, which is there. For experience certificates, there is 200 kb limit. So they have to keep their documents ready as per the requirement of this particular portal. Then everything is specified on the portal, Yes, and the learner has to just read, the applicant has to just go through each and every specification which is different for a photograph, for the document, Yes, for ma'am. various things, because otherwise you'll not be able to upload it on the portal and then they will experience difficulty. Exactly, Yeah. ma'am. Then comes the payment of fee, which is very important. There are different mediums through which they can make the payment. One is the credit card, debit card, and then net banking is also there. So they can use any of these medium for making the payment of their fee. Then some instructions regarding registration fee and cancellation of their admission and then refund of fee. All this information is also given on this particular portal. So once the student register himself or herself through this new registration link, then they have to enter their username and password over here and log in. Then they can fill the application form and apply for admission in IGNOU. Okay, and if in the case of if there is a discrepancy or if their admission is confirmed, then they will immediately get a message on their email and maybe a message on their mobile. So then they have to follow that, and then subsequently you get the confirmation of your admission information, and you will get your confirmation letter, you will get your identity card, and you have to be very careful because that will carry your enrollment number and your verified photograph and everything, and that will be your passport into the university for all times till you complete your period of study in IGNOU. So you have to be very careful. So that was a very well explained admission process, which is totally online for the programs which are in the open distance learning mode. What about the online programs? In that also maybe some learners would be interested. Of course, in that the delivery is through a LMS. Yes, Whereas in the ODL mode we have different components. We'll be coming to that very shortly. But I think the process is very quickly. You could tell them about the online programs. As Madam Dr. Anjana rightly mentioned, that we have two categories, ODL and online, and we also have a limited intake program, that is, we call it fixed limited intake programs or flip programs in IGNOU, which are basically health science programs, right? So where the only difference is, I think the number of seats are fixed. Here there is no bar on the number of students who can enter, provided they fulfill the eligibility criteria and they meet the specifications of the admission process. So very quickly, if you could go through the online programs. The procedure for applying in online programs is just the same as that of the ODL programs. The only difference is with this portal. There we had IGNOU Samarth portal, and here we have IGNOU iop.samarth.edu.in. So except for this, there is no difference. They have to follow the same procedure as was explained for the ODL programs. Okay. So that's great, and by and large the process is the same for admission. So once they get the confirmation of their admission in IGNOU, then starts the teaching learning process in the university. And I think it is very important before we tell them about the different instructional components, it is important for them to understand what is the difference between our conventional system and the ODL system. Of course, IGNOU needs no introduction. It is a central university established by an Act of Parliament in the year 1985, and in the last more than 3.5 decades of its existence, it has attained various milestones, and it operates on the basic principle of access, equity and affordability.
And of course, quality. There is no compromise on the quality, though there is a flexibility in the admission in various IGNOU programs, but the rigor of the programs is matched with any of the good institutions in the country. And IGNOU also has its presence overseas. Of course, in the country, we are there in all the states. We operate through our regional centers. And also, I would just like to inform our listeners, viewers, that IGNOU operates on a 3-tier structure. That is, at the headquarters, this is the topmost rung. Then the learner support services are provided through a network of 57 regional centers spread across the country. In some states, we have more than one regional center also, and these regional centers are operating through learner support centers or study centers, and we have more than 2,000, almost 2,100 learner support centers across the country. Other than that, we have our presence overseas also in some countries, and so we are catering to the international audience as well. But what I was trying to tell you is that once you have taken admission in IGNOU, you will be assigned, you would have seen which regional center is convenient for you, and accordingly you would have been assigned that regional center. And under that regional center, you would be allocated to some study center in the ODL mode programs, right? So, and I would also like to inform our viewers that in the last 2 years, especially after the pandemic, when the whole world came to a standstill, literally in terms of all its educational and other activities, IGNOU's continue to provide uninterrupted support services to its learners, and you know, the learners, we transitioned, the university transitioned into the online mode of delivery of its study. So the support services were provided in the online mode as well by the regional centers, and there we used various other platforms of imparting instruction to our learners. That is, other than the study at the study centers, we also use the digital platforms, and we use this platform through which you are listening to us or viewing this program. That is the Gyan Darshan, which is the TV channel, educational TV channel of the university, and also the Gyan Vani or the radio channels, which is another interactive platform through which the university provides teaching, learning to its students. So the learner, whoever takes admission in IGNOU, you should feel very happy and proud that you are part of such a large system, because not only are we catering to learners across the country and abroad, we are also providing support services to the defense personnel through 12 regional centers and 84 of their study centers, which we call recognized regional centers. They are the personnel and wards of the defense forces, that is Army and Navy, and also the Assam Rifles. So this vast network of learner support centers and regional centers, the learner, I think it is very important for the student to understand that once you have taken admission, you have got your confirmation. Now the next step is that you will be waiting for your study material. I'm sure before you took admission, you would have certainly seen the common prospectus. Dr. Anjana, could we show them the common prospectus if possible through this on the website? Let them see where they can access the common prospectus. Because apart from the website, I think they need to study the common prospectus, because many a times there are queries in their minds. Are the programs recognized? Are they at par with the rest of the programs in the country, with the other universities? We do receive these kind of queries. So if you see, our IGNOU programs are recognized by the University Grants Commission, and they are at par. All the degree, diploma, certificates, they are duly recognized, and even those programs which are in the purview of the regulatory bodies like the NCTE for the education program, and also the MBA and MC are recognized by the All India Council of Technical Education. So rest assured that you are in an excellent university which provides quality instruction through its various platforms. So what I was saying, Dr. Anjana, is if they could see the prospectus, here you will get, it's a comprehensive document. It is online, it is digital. If you click on that, maybe you can show them the
the prospectus? Yes, ma'am. This link for common prospectus is there on the Samarth portal itself. If Okay. we just scroll down and we find at the Okay, second from the number portal point where they from the take admission, yeah. Yes, it's there itself. It's given. We just click over here and we find that it's IGNOU common prospectus, the latest one, Yeah. e-prospectus for January 2023. It's Yeah. available there. So please go through the prospectus, and you will get all the necessary information which a learner is keen and curious to know about the university, its programs, its delivery mechanisms, its recognition, the kind of achievements the university has made, the different platforms, the digital platforms, the channel-based platforms. All, it's a repository of information which is available, right? So Dr. Anjana just showed you the prospectus, and the, you could click on any program or study and you will get the basic minimum information is provided over there. So Dr. Anjana, once the student has got the confirmation of admission and all, I think the next logical question in the learner's mind is, now where are my books, from where do I study? So the learner should know, I mean, we would like to inform that IGNOU provides self-learning materials. So these self-learning materials are in the form of print. You get printed study material, and we have digitized all our study materials. So what are those repositories? We would like to show you that there is a chance that since we are dealing with such large numbers, every year we register around 11 to 12 lakh students, and we have around 36 or to 38 lakh students who are on the rolls of the university, because the university provides a flexibility. There is a minimum and a maximum period. So if you register in a 2-year program, you have the option of completing it in 4 years. If you register for a 1-year program, you can complete it in 3 years. So we have students on the rolls, and we are dealing with such large numbers that there are possibilities of delay along the way of receiving the material. And in the event of a delay, I would advise our students to log on to the IGNOU repository, that is EGNOU. And we also have a mobile app, the IGNOU e-content app, which you can download from the Google Play Store. And just a word of caution that because there are many players in the market, there are private players, you should be very careful and cautious that you choose the authentic IGNOU platform. That is the e-content app which is on Play Store. You should download that mobile app, and you can get the entire course material in digital format on your mobile app if you so choose to study. I think there is also a provision, Dr. Anjana, that if any student does not choose to take the printed material, they get a 15% fee waiver. Yes. And 15% less fee, and you can choose to study totally in the digital mode. I mean, get the study material in digital mode. So I was saying, in case there is a delay, you can, and you're curious to know about the study material, the program guide or the starter kit, then you can go on to the IGNOU digital repository, that is EGNOU, which I would request Dr. Anjana to share with our viewers. What is it that EGNOU can offer to our learners? Ma'am, this is the, as you have rightly said, the students who are not in a position to get the study material in hard copy just after their admission, they can access our study material in digital form through this EGNOU platform, which is the national repository, as you have already said. And we have all the study material of all the programs that are being offered by our university through this portal. Just to show the homepage of this particular portal, we find that there are a number of programs. The direct links are given on the homepage itself, and if we want to search some other program, maybe I have given the link. Can we click on one? Yes, yes, we can just click on one. This is the live page from EGNOU. We just scroll down and try to see the study material for BAG English. We find all the courses over here. We have BEGA 182, course code is there, then different blocks are there. We move one by one, then we find the units there. These are there in the PDF format. Okay. So just we have to move from one window to the other, and then we find that all the study material, all the course content, that is already available on this particular portal. Apart from this digital material in this digital form, we also find the live recorded sessions are there from Facebook that were recorded by the university. We have the SWAM course content
through this portal itself. We have YouTube videos, we have Swamprabha channels. This link, you were telling about the Swamprabha channels, different mode of Imparting instruction, imparting yeah. the instructions to the students. So we have 4 channels with us: channel number 17, 18, 19, 20. Channel 17 is for social sciences and humanities, channel 18 is for basic and applied sciences, then 19 is for professional and vocational education, and then we have channel 24, state open universities and teacher education. So if we want to see the videos that have already been telecast through these channels, we can go to archive videos and we find the link for already. Dr. Anjana, this is very interesting and I think a very useful piece of information which we would like to share with our learners. But we would like to take a short break of a few minutes, and we will come back and resume our discussion about the digital study material, which I think is absolutely important in today's digital world, and the learner should be the who have registered or prospective learners should know about this IGNOU repository, which is easily accessible to them. So we'll join back with you. Stay with us, don't go anywhere. In a few minutes we'll come back. पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं। इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में हैं हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज़, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं। अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं या अपशिष्ट से जुड़ी हुई परामर्श सेवाएं, अनुसंधान या विकास कार्य करते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण और इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है, या अधिक से अधिक आप इसे 2 साल के अंतराल पर भी पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल है स्व शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री, ऑडियो वीडियो संसाधन और विभिन्न माध्यमों से शिक्षण की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, चलिए
नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है इस ओपन सेशन सत्र में। उसके दूसरे भाग में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ हैं मेरी कुलीग डॉक्टर अंजना जो क्षेत्रीय केंद्र नोएडा से हैं, और मैं हेमा पंत क्षेत्रीय सेवा प्रभाग से आपका अभिवादन करती हूँ। और इस सत्र के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद उसे किस प्रकार की सुविधाएं या सेवाएं विश्वविद्यालय उपलब्ध कराता है। तो हमने जैसा आपको बताया कि आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन यू वुड लाइक टू नो अबाउट द स्टडी मटेरियल दैट इज़ बेसिकली इन सेल्फ इंस्ट्रक्शनल और सेल्फ लर्निंग फॉर्मेट। दैट इज़ एन अंडरलाइंग फीचर ऑफ द ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम बिकॉज इट इज़ अ लर्नर सेंट्रिक सिस्टम। ये छात्र केंद्रित व्यवस्था है जिसमें छात्र की सुविधा, उसकी क्षमता, उसकी इच्छा, उसका एटीट्यूड, उसका अप्रोच, उसके आधार पर वो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे ले जाता है, निर्धारित करता है। तो उसके लिए विश्वविद्यालय के तरफ से किस प्रकार से उसे फैसिलिटेट किया जाता है, उसमें क्या क्या आयाम जुड़े रहते हैं जिससे कि वो सुचारू रूप से अपना पाठ्यक्रम यहाँ से पूरा कर सके और सफल होकर के निकल सके इस विश्वविद्यालय से। तो इसके लिए हम विभिन्न एस्पेक्ट्स पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जैसा एक आपको बताया, सेल्फ लर्निंग मटेरियल विच इज़ इन द डिजिटल फॉर्म। बेसिकली ऑफ कोर्स आवर मेन स्टे स्टिल इज़ इन द प्रिंटेड फॉर्म। मैनी लर्नर्स आर still opt for the printed study material, and that has also specific features which we call access devices, जो कि उसको सुविधा प्रदान करते हैं। उसको they are not in the form of textbook. It's different from a conventional textbook. It is in the form of booklets जिनको हम blocks बोलते हैं। तो हर कोर्स का एक निर्धारित नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं जिनको हम बुकलेट फॉर्म में होते हैं। उन पे चौड़े मार्जिन्स होते हैं, हाशिए होते हैं जिन पे आप अपने नोट्स वगैरह सेल्फ स्टडी करके आप अपने समरीज या नोट्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ सेल्फ चेक क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कि हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर कोर्स ऑफ स्टडी एज यू मूव अलॉन्ग, वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। इट गिव्स यू अ रीइंफोर्समेंट टू कंटिन्यू विद योर self study. So that's a different format of the printed material also. And along with that, the self-check questions help you to assess yourself. It's a kind of self-assessment process. So this is whether it is a digital material or the printed material, this is the basic format which is followed in IGNOU. And apart from that, Dr. Anjana, what is the other next aspect? Hello, I think we have a call. We have a caller. Hello. 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 Oh, we have a caller from Haryana. Hello. Good afternoon, ma'am. हाँ, गुड आफ्टरनून। बताइए, अपना नाम बताइए। Yes, ma'am. My name is Pinky. Okay. Hello, Pinky. Please ask your question. Ma'am, my question is, मैम मैंने 2022 में 11 नवंबर को एडमिशन लिया था। हाँ जी। मुझे ये जानना कि मेरे एग्जाम कब होंगे। कौन से प्रोग्राम में लिया था आपने एडमिशन? बीए में एडमिशन लिया है नवंबर 2022 में। तो ये आपने जुलाई 2022 सत्र के लिए लिया होगा या जनवरी 2023 के लिए? यस मैम, जनवरी 2023 सेशन 23 के लिए मैम। हाँ, तो अभी आपने एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2023 सेशन में होगा क्योंकि आपको मिनिमम 1 साल बिताना होगा बीए प्रोग्राम में। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगी और जो असाइनमेंट वगैरह होंगे वो आपको करने होंगे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज के लिए। जी मैम। ठीक है, तो दिसंबर के लिए तो अभी वक्त है। एग्ज़ाम फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। असाइनमेंट के लिए अभी हम इस सेशन में अगर आप जुड़ी हुई हैं हमसे तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं असाइनमेंट्स। आपको फर्स्ट ईयर में जो भी आपके कोर्सेज हैं, हर कोर्स में एक असाइनमेंट करना रहता है और उसे आपको अपने स्टडी सेंटर पर जमा करना होगा।
या आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क में रहेंगी, तो अगर वो ऑनलाइन सबमिशन ले रहे हैं तो उस तरह से आपको जमा करना होगा। अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये सारे असाइनमेंट्स आपको इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे, और वो कहाँ आपको मिलेंगे वो अभी डॉक्टर अंजना आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगी। ठीक है? ओके मैम। Okay, so as the learner has rightly said, we were talking about the self-learning material. So after studying in every course, there has to be, they have to do one assignment. Assignments in IGNOU are a mandatory component. ये एक अनिवार्य component है IGNOU के पूरे course of study में। तो इसके बगैर आपकी जो study है वो अधूरी रहेगी और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो असाइनमेंट कहाँ पर उपलब्ध होंगे हमारे विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजना? वेबसाइट से हम कह रहे हैं, तो वेबसाइट में एग्जैक्टली कौन से लिंक पर इनको दिखेंगे, तो कृपया ये अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं तो आई थिंक इट विल बेनिफिट देम। बिल्कुल मैम। ये इग्नू की हमारी वेबसाइट है, होम पेज है। इफ़ वी गो टू स्टूडेंट सपोर्ट एंड देन वी गो टू डाउनलोड्स, वी जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी फाइंड द लिंक फॉर असाइनमेंट्स। यहाँ पर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स डिफरेंट लेवल वाइज इनका है। अगर ये बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के जैसे स्टूडेंट थे, देन दे फाइंड के यहाँ पर जनवरी 23 एंड जुलाई 23 जो स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है उनके लिए असाइनमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। वी क्लिक हियर, देन वी गो टू द पर्टिकुलर कोर्स। इनका जो भी कोर्स इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का होगा वो वहाँ पर अपने कोर्स कोड को सर्च करके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। And ma'am, you would also like to highlight upon the instructions that are given on the cover page of assignments, because यहीं पर सारी information दी होती है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, कितने क्वेश्चंस हैं, और एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट दिया होता है, जहाँ पर ये तो ज़रूरी है कि एनरोलमेंट नंबर वो अपना ठीक ठीक लिखें। हम हमेशा ही अपने विद्यार्थियों को बताते हैं ड्यूरिंग द इंडक्शन मीटिंग्स, और हर सोर्स से हम इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो डिटेल्स हैं, अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर वो ठीक ठीक यहाँ पर दें, ताकि उनके असाइनमेंट्स टाइमली इवैल्यूएट और सारे असाइनमेंट्स हैंड रिटन होने चाहिए, ये भी अनिवार्यता है। और जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि किस तरह का आपको वो प्रेजेंट करना है अपने असाइनमेंट को, इट शुड बी हैंड रिटन, और मूल रूप से उसको लिखना है। इट हैज़ टू बी योर ओन असाइनमेंट, योर ओन एक्सप्रेशन। ये नहीं है कि जो बुकलेट्स हैं उनमें से आप उसको उतार के उसमें दे दें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इग्नू में जो असाइनमेंट कार्य है, जो सत्रीय कार्य जिसको हम कहते हैं, उसके दो फंक्शंस हैं। इट हैज़ ट्विन रोल टू प्ले। एक तो है कि आपका असेसमेंट, आपकी जो है इवैल्यूएशन में उसकी वेटेज होती है, 30% वेटेज असाइनमेंट्स की रहती है और 70% आपके टर्मिनल असेसमेंट की रहती है। लेकिन असाइनमेंट जब आप तैयार करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, उस चैप्टर या वो कोर्स, जो बुकलेट आपकी है, जो ब्लॉक है या जो कोर्स है, उसको आप पूरा पढ़ लें, और उसके बाद फिर आप अपने शब्दों में उसको लिखें और तब जमा करें अपने स्टडी सेंटर पे। इट शुड बी हैंड रिटन, क्योंकि ये टीचिंग टूल कैसे है, क्योंकि जब आप उसको इवैल्यूएट, वो आपका असाइनमेंट होगा, जब उस पर मूल्यांकन होगा, तो जो भी कमेंट्स उस पे आएंगे उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और उसके साथ साथ जब आप तैयारी करके उसको असाइनमेंट को आंसर करेंगे तो आपकी खुद की एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगी। सो वी से दैट इट हैज़ अ डुअल पर्पस इन इग्नू। इट इज़ नॉट जस्ट अ असेसमेंट टूल बट ऑल्सो अ टीचिंग लर्निंग टूल। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अंजना आपने दी कि असाइनमेंट्स को कहाँ से पाया जा सकता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए उस सेशन में आज जैसे ये स्टूडेंट ने हमें फ़ोन करा, सो एडवाइस तो ये है कि आप अपने मिनिमम पीरियड में उसको जमा कर दीजिए, उस पर कार्य करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, और उसको अपने निर्धारित जो स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर जहाँ भी आपको निर्देशित करता है, चाहे ऑनलाइन, डिजिटल, वो ईमेल के ज़रिए या कैसे भी, आप उसको जमा करिए। नाउ तो वी आर टेकिंग फेस टू फेस मोड में। तो उसके बाद मान लीजिए किसी कारणवश, क्योंकि ये सुविधा विद्यार्थियों के पास है, वो उस निर्धारित समय में नहीं जमा कर पाते हैं, नहीं उसको कर पाते, तो आप अगले सेशन में जो असाइनमेंट जो वेबसाइट पे उपलब्ध होगा, इट हैज़ टू बी ऑफ दैट सेम सेशन। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार विद्यार्थी पुराने ही सेशन का असाइनमेंट जमा कर देते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, एंड देन उनका टाइम वेस्ट होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है इग्नू में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड लर्नर शुड बी अवेयर। सो वी गॉट दिस क्वेश्चन, सो वी केम टू असाइनमेंट्स, बट वी हेलो
हाँ हेलो हेलो जी, नाम बताएं प्लीज। मेरी आवाज आ रही है मैडम? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप अपना प्रश्न पूछो और नाम बताइए जी। अपना प्लीज। जी जी नमस्कार मैडम, मैं प्रशांत कुकरेती बात कर रहा हूँ हाँ जी। से। और मैं MA CSR कोर्स कर रहा हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, मैं उसको ऑनलाइन देख पा रहा हूँ। तो जी। मेरा ये क्वेरी है कि उस रिजल्ट में मुझे एक असाइनमेंट और एक मेरा थ्योरी का एग्जाम में नॉट कंप्लीटेड दिखा है। तो हाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट टोटल अपलोड हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं उसके लिए दोबारा से उसको एग्जाम को दूं। नहीं, आपने आपका रिजल्ट आप कह रहे हैं असाइनमेंट नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है। जी, एक सब्जेक्ट में असाइनमेंट नॉट कंप्लीटेड और एक थ्योरी सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट है मेरे टोटल। हाँ तो मेरे 5 असाइनमेंट वहाँ पे उसके मार्क्स दिख रहे हैं और 5 के थ्योरी के मार्क्स दिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स, सो माइट बी पॉसिबल कि अभी आपके सारे कोर्सेज का रिजल्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन डिक्लेयर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो एक थियोरी कोर्स आप बता रहे हैं उसके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। और जो आप असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपने सबमिट कर दिया दैट विल आल्सो बी अपलोडेड शॉर्टली, दैट विल बी इवैल्यूएटेड एंड तो मैडम मैं कब तक वेट करूं, क्योंकि अभी न्यू जून की तो डेट अभी आने वाली है ना। फॉर दैट पर्पस। हाँ नहीं, आप ये असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस भी आता है इसमें, तो आप एक ईमेल अपने रीजनल सेंटर पे भी भेज सकते हैं कि अब मार्क्स आपके आगे ट्रांसमिट हो गए हैं नहीं, ये पता कराने के लिए। वैसे यहाँ पर अगर आपका एनरोलमेंट नंबर है और आप वेबसाइट में जाके असाइनमेंट स्टेटस आप अपने उस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी पे आपका असाइनमेंट पहुँच गया है या नहीं, दैट यू कैन चेक। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करिए, एक ईमेल लिखिए और SED को भी, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को भी ईमेल डालिए कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपका असाइनमेंट ग्रेड नॉट रिफ्लेक्टेड शो कर रहा है। तो इसकी वजह यही हो सकती है कि या तो रीजनल सेंटर से वो ग्रेड आपका यहाँ ट्रांसमिट नहीं हुआ है, और अगर यहाँ आ गया है SED पे तो यहाँ से वो अभी अपलोड होने की प्रोसेस में है। सो यू जस्ट गिव इट 2-3 days more time. Last date is 5th April for submission of exam form for June 23, right? So I hope we have answered your question. एक्चुअली मैंने डायरेक्टली सबमिट किया है ये इग्नू दिल्ली में, ये अपने असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट का मैं आई विल वेट, बट आई वांट टू गेट क्लेरिफिकेशन अबाउट थ्योरी एग्जाम। Theory exam, see, madam just told you, and the university is in the process of uploading the results. राइट और यहाँ पर आपको जानकारी होगी कोर्स वाइज रिजल्ट्स अपलोड होते हैं, तो आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए, अपलोड हो जाएगा। नहीं तो एक ईमेल SED रजिस्ट्रार को आप भेज दीजिए और कॉपी में अपने रीजनल सेंटर को भी रखिएगा। श्योर मैडम, आई विल वेट फॉर 2-3 days, अदरवाइज आई हैव टू अगेन गिव दैट एग्जाम, नो? राइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। So this is about, but very quickly we are running out of time, Dr. Anjana, and we spoke about assignments. वो इसलिए कि we got a question regarding assignments, and but I wanted to tell our viewers, the learners, the prospective learners, that once you get your study material, you should start working. And जो सबसे पहला जो आपका काउंसलिंग या जो आप फेस टू फेस या ऑनलाइन मोड में जैसे भी यूनिवर्सिटी आपका रीजनल सेंटर करवाए, तो आप अपने पीयर ग्रुप, अपने काउंसलर्स, अपने स्टडी सेंटर फंक्शनरीज के सानिध्य में आ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट देम, वी कॉल इट the first such session or the contact session is induction meeting. Right. तो can we show our learners, एक शेड्यूल बन जाता है सभी स्टडी सेंटर्स का, हर रीजनल सेंटर पे किस दिन कौन सा स्टडी सेंटर इंडक्शन कराएगा, और वो सारे विद्यार्थियों को सूचना दे देते हैं। तो इफ़ यू कैन शो देम ऑन अ पर्टिकुलर रीजनल सेंटर वेबसाइट, लेट्स से रीजनल सेंटर नोएडा की वेबसाइट का ही दिखा दीजिए, तो काउंसलिंग शेड्यूल्स भी उस दिन आपको प्राप्त हो जाते हैं इंडक्शन मीटिंग में। इंडक्शन मीटिंग के शेड्यूल्स आपको रीजनल सेंटर वेबसाइट से मिल जाएंगे। लेकिन आपसे एडवाइस ये है कि इंडक्शन मीटिंग आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये जिसको हम प्रेरण सत्र भी बोलते हैं, इसमें आपको समस्त
जानकारी एक नटशेल में मिल जाएगी उस इंडक्शन मीटिंग में कि आपसे क्या क्या अपेक्षित है, आपको क्या क्या अपेक्षा करनी है अपने विश्वविद्यालय से यानी रीजनल सेंटर से या क्षेत्रीय केंद्र से, कहाँ संपर्क करना है। तो ये अगर आप इंडक्शन मिस कर देते हैं, यूँ तो जब से डिजिटल मोड आया है तो रिकॉर्डिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड यू कैन सी, यू कैन गो बैक एंड रेफर दोज रिकॉर्डिंग्स एंड गेट द इंफॉर्मेशन, बट बेटर इट इज़ टू बी कीप अब्रेस्ट, माने आप साथ साथ चलते रहिए तो आपका पूरा जो है समय से एक आपका कार्यक्रम के विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं इंस्ट्रक्शन के, वो आपके पूरे होते रहेंगे। तो इंडक्शन कर लिया, उसके बाद काउंसलिंग हर कोर्स की काउंसलिंग कराई जाती है, और जो काउंसलिंग है वो इज़ नॉट लाइक द रेगुलर एवरीडे टीचिंग दैट विल हैपन। इसके निर्धारित सेशन होते हैं, डिफरेंट इन स्पेल्स काउंसलिंग इज़ ऑर्गेनाइज। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप संपर्क में रहें, आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट को देखें और उस वेबसाइट पे समस्त जानकारी उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर अंजना, कैन वी शो देम द counseling schedules which are available on the regional center website? Definitely, ma'am. Yeah. We can see the website of Regional Center Noida. And here we have the quick links, और यहाँ पर हमने काउंसलिंग शेड्यूल का हाँ, ये भी दिखा सकते हैं इनको, या एंड वी फाइंड के जो भी स्टडी सेंटर्स से काउंसलिंग शेड्यूल्स रीजनल सेंटर्स को पहुंचते हैं, वी कीप अपलोडिंग दोज काउंसलिंग शेड्यूल्स ऑन द रीजनल सेंटर वेबसाइट्स, एंड द students of a particular study center, they can just go through that counseling schedule and attend the counseling sessions as per the schedule. ये जुलाई 22 का दिखा रहे हैं क्योंकि अभी वो जनवरी 23 में एडमिशन अभी हमारे चल रहे हैं। Yes, अभी admissions are on and the last date is 31st March as we just told you. So once admissions are finalized, and after that the regional center will display the counseling schedules on each of the regional center websites. So this is very important that you should be very informed and you should be very proactive, क्योंकि डिस्टेंस लर्नर की एक एट्रीब्यूट ये भी है कि उसको खुद को प्रोएक्टिव होना है, नॉट जस्ट वेट फॉर इंफॉर्मेशन टू अराइव फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन. ऑफ कोर्स द इंस्टीट्यूशन इज डूइंग इट्स diligence, they will send you all the required information, but you also have to be, as a distance learner, very proactive and eager to see what I have to do next. So once you have got the material, you are in for induction, then you have got the counseling session, you have to submit the assignments as we just informed you. उसके बाद आता है आपका assessment. Before we come to assessment, Dr. Anjana, can we tell them about the various other digital platforms which the university, as we said, has been kind of transitioned into the online or digital mode? तो मेरा आपसे गुजारिश है कि विद्यार्थी किस तरीके से other yes, do we have a question? Is there a call? So please tell them about the other platforms which the university has put in place. Hello. Ma'am, you have rightly said that we have multiple. There is a call from Delhi. Yes. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. मैम मैं बीएजी प्रोग्राम का स्टूडेंट बोल रहा हूँ। Yes. मैम मुझे पूछना था, ये एग्जामिनेशन 2023 का फॉर्म जो फिलअप हो रहे हैं वो अभी सर्वर आज बंद है, तो वो कब तक खुल जाएगा? नहीं, वो उसमें सिर्फ आज ही एक कुछ दिक्कत आई है सर्वर में, तो वो आज के दिन ही सिर्फ परेशानी रहेगी, शाम तक उसके बाद सर्वर रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, देन यू कैन सबमिट योर एग्जाम। प्लीज कम अगेन प्लीज, पार्डन, दोबारा पूछिए। मैम मैंने रीवैल्यूएशन भरा था एक सब्जेक्ट का, तो 16 मार्च को भरा था, तो अभी तक उसका आया नहीं कोई अपडेट, ना मुझे अभी फोटोकॉपी आई है, तो क्या मैं उसका एग्जाम फॉर्म भरूं या फिर अभी? रिवैल्यूएशन का डॉक्टर अंजना, ही वांट्स टू नो। Ma'am, either he can drop an email to SED or he can register his query on IGNOU portal, so that the regional center can forward it to student evaluation division, and the official concerned, they may look into the actual yes, because status. evaluation is also again the domain of the evaluation division. However, the university has provided one portal जिसको हम igram portal बोलते हैं, वो भी डिजिटल है, उस पर आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए। एक ईमेल SED को भी आप डाल सकते हैं कि आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया और क्योंकि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो उसके बारे में वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करें रिवैल्यूएशन का। तो I hope we have answered your question.
So now, very quickly, Dr. Anjana, we were talking about the different social media platforms. Could you please tell them how the university is facilitating teaching learning through? Yes, hello. Hello. हेलो। Yes, welcome. हाँ Please. हाँ जी मैम, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ, नाम बता दें प्लीज, अपना अपना प्रोग्राम बताएं। मैम निशा, प्रोग्राम बीएससी बैचलर ऑफ आर्ट्स। हाँ, पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन था, मेरे फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे अभी तक। उसके लिए देखिए, अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, आप हमसे जुड़ी हैं, तो मैंने अभी बताया कि अगर असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए हैं तो आप इसकी 2 वजह हो सकती हैं। आप अपने क्षेत्रीय केंद्र पर भी मालूम कर सकती हैं कि अवार्ड्स आपने कब जमा किया था असाइनमेंट, और आपके पास असाइनमेंट जमा करने का प्रूफ होना चाहिए। वो आप अपने रीजनल सेंटर पे दे दीजिए और पता कर लीजिए वहाँ से ग्रेड्स यहाँ ट्रांसमिट हो गए हैं कि नहीं। और अगर रीजनल सेंटर ने भेज दिए हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पेज पे जा कर के असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस देख लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि असाइनमेंट अवार्ड्स रीजनल सेंटर से एसईडी स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन पे आ गए हैं या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो तब आप एक ईमेल डाल दीजिए स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को एंड आस्किंग देम टू अपलोड योर असाइनमेंट मार्क्स। ठीक है, ओके मैम। राइट। सो ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। या Ma'am, we were talking about different channels, Yeah, different social media platforms. So if we could quickly go through those. Yeah. Yes, we have, as you have said, we have the counseling schedules that are conducted by the study centers. Then we have Gyan Darshan, which is live teleconferencing sessions are there. Then we have Gyandhara or Gyanvani, through which live interactive sessions are conducted by IGNOU headquarters, where resource persons come and they interact with those students. Apart from that, we have Swayam Prabha channel. We have already talked about it, that we have 4 channels in which counseling sessions are provided in different regional languages from across the country. So these are the different medium through which counseling sessions or teaching material is provided to the students. हाँ, इसमें हम ये जो स्वयं प्रभा चैनल्स की आपने बात करी, हम अपने विद्यार्थियों को सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि द यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड टीचिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस इन अ बिग वे, बिकॉज एज वी ऑल नो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 also lays great emphasis on teaching in the regional language or mother tongue, and for that IGNOU is providing academic counseling in across 12 languages and also in English, 12 regional languages and in English, and through its 20 regional centers. And this is channel based counseling, and the course wise counseling schedule is available on the Swayam Prabha link. You can access that and you can listen, and the recordings are also archived. So if you are interested in a particular regional language, let's say if you want to do it in Tamil, so RC Madurai is providing channel based counseling in Tamil language. So that particular schedule is available on the Swayam Prabha link, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये हेलो, प्रश्न पूछें अपना, स्वागत है आपका। Okay, so this is some of, and then we are also very actively, IGNOU has the official Facebook page, जो हम social media platforms की बात कर रहे हैं. We have a Twitter account, we have the Twitter handle where you can access all the latest updated information is there. And very importantly, I wanted to tell our viewers that we also are, we have a very robust and an active alumni portal. So ये जो alumni हमारे, as on date, we have around 38 lakh alumni. So the on the roll learners are around more than 36 lakhs, and around 38 lakh on the roll. Our alumni strength is there. We are one of the largest alumni resource base. और IGNOU का alumni dedicated alumni portal है, उसका भी लिंक आप वेबसाइट से देख सकते हैं. और एक समर्थ पोर्टल पर ही आप alumni, if you have passed out successfully from IGNOU, you can register on that portal. प्रति सप्ताह हम लोग हर इतवार को alumni meetings करते हैं, तो आप उसमें participate भी कर सकते हैं. उसमें भी आपको विश्वविद्यालय की विभिन्न जानकारी मिल जाएगी. तो if you access the Facebook page, the Twitter handles, if you see we are also there on Instagram. So IGNOU has made its presence all over the world.
also in the country through various media platforms. We are providing education through open distance learning mode, in the online mode. And this is a mega institution. We were recently accredited with A++ ranking by the National Assessment and Accreditation Council of India. So you should happily join any program of your choice and fulfill your dream of acquiring higher education qualifications, upgrading your skills, your knowledge domain, and be a part of this huge IGNOU fraternity. So thank you, Dr. Anjana. It was an interesting session, interactive session, and we would like to tell our viewers that you can come back for another vibrant and interactive session next Tuesday at the same time from 3 to 4 p.m. on this Gyan Darshan channel. You can see the recording of this program at 8 p.m. tonight. So sabhi ko mera namaskar aur dhanyawad. आइए अब आपको दिखाते हैं स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मल्लिका बनर्जी द्वारा गाया एक गीत देश वंदना, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। সার্থক জনম আমার জন্মেছি দেশে সার্থক জনম মাগো সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালো বেশে সার্থক জনম আমার জন্মেছি দেশে কোন দেশেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে আঁখি মেলে
Dear learners, welcome to teleconferencing session. In this session, we will discuss about role of indigenous knowledge in disaster management. Me myself, Dr. A. Senthamil Kanal from School of Social Sciences. In this session, this relevance of indigenous knowledge, how it will help in warning, how it will help to adaptive capacities, so how it will improve the local communities and also. These courses come under that BAG and BA Public Administration in honors also. In recent times, there has been a constant occurrence of natural disasters around the globe, mainly due to ill-conceived development efforts and unprecedented climate change. Recently, you have witnessed about the Turkey earthquake also. Even Delhi people has been witnessed the earthquake in the last week also. These are all used to happen constant occurrence of natural disasters and around the globe. For instance, if you take disasters such as unforeseen floods, unforeseen floods, you can say that in the urban area, you can say that flash floods, heavy rain, drought are the that the results of the climate change and all. So such climate variations not only lead to natural catastrophe, but also cause a huge impact on the lives of the local community. As you know that recently, 2 years before, we have witnessed the COVID-19. So how it has affected, that was a very unforeseen only. How it was affected our livelihood, not only in that rural area, it is the urban to rural, not only national, it is international level also. So the occurrence of such disaster sometime unavoidable. So the repercussions of such disasters is avoidable when the participation of community members given recognition in the disaster reduction activities. Like for example, you can take it that particularly one district is affected by the disaster. Okay, and the district is consist of the 60 to 70 villages. So first, where will the district administration used to go? The district administration used to go mostly affected village only. So instead of that, we have to identify the local knowledge, local strength, local adaptive capacities. So these are the things will helpful, and you can cope up easily and immediately to adapt the disaster and all. For example, if you have a targeted goals, sustainability of risk reduction interventions also depend upon the involvement of local populace, their knowledge, culture, and the traditional practices. Like for example, disaster reduction intervention. What do you mean by disaster risk reduction intervention? Disaster risk interventions is like that. Like earlier, we used to call disaster management, managing disaster. So we know that disaster is unavoidable. So instead of managing disaster, we can reduce the risk of the disaster. So that's what nowadays we are using the word disaster risk reduction activity. So disaster risk reduction activity, how to improve the how to improve the situation. So there are so many components are there. When you are implementing any program, that local involvement, that local populace, their knowledge, culture, and the traditional practices, these are also you have to give more importance also. And also the adaptive capacity of the communities helps bringing back the resilience and also in reducing the levels of the vulnerability. So when the disaster has been affected, you have to bring back the community in the normalcy. That's what we used to call the resilience. So in the resilience, you can't bring back it from the outside of the village. Okay, you have to bring back from the local community itself, only based on their local knowledge and other things also. Only you can get a support from the outside, support from the government or any non-governmental organization or intergovernmental organization and also. So the adaptive capacity could be increased by emphasis on the traditional knowledge of the local communities and all. So once you have given the, once you have given the importance to the local knowledge, then only it used to, the situation used to improve. Other than that, outside you can get it the financial support and all. So in that way, local knowledge or traditional knowledge or indigenous knowledges are more important only. So before going to the discussion, we should know about what do you mean by traditional knowledge. So what is traditional knowledge? Granier, he said that it is a unique traditional local knowledge existing
within developed around the specific conditions of women and men indigenous to a particular geographical area. So normally it's not about it. It's you can't generalize for entire district or place. It is to be in a particular geographical area only. The word traditional knowledge is like derived from the belief that the local communities have a knowledge about the history of the locality based upon the past experiences. So how do they know about these kind of a knowledge? Mostly it used to based upon the past experience only. Like for example, if you see that people living nearby the Brahmaputra, they know how to handle the situation. Okay, the same way people living in the riverside area, people living nearby the coastal area, and people in the mountain area, they know how to handle the situation and all based upon the past experience only. Like here you can mean that traditional knowledge in the sense you can say that agriculture knowledge, medical knowledge. Like for example, we used to say that grandmother medicine kind of. So these are the things we used to say as a traditional knowledge or local knowledge and all. And Bergs in 2007, he defines that traditional knowledge as a body of cumulative knowledge, practice, and belief evolving by adaptive process. Okay, it is a cumulative knowledge. Okay, it is a practice, it is a belief. These are the adaptive process and hand out through the generation by cultural transmission about the transmission of living being with the one another environment also. You know that it used to be, many people used to say, if you do these things, my grandmother has taught us, my grandmother has taught us. So these kind of a tradition will follow by generation and by generation only. So the traditional knowledge can be called also as a indigenous knowledge or local knowledge. Okay, we can say, like for example, traditional knowledge, indigenous knowledge, local knowledge, you can term it at anything like that only. The same way UNESCO describes that traditional knowledge has the same cumulative body of knowledge, know-how practices. Okay, it is a know-how practices and representation and maintained, developed by peoples with extended histories of interaction with the natural environment, while indigenous as attached to place and to the indigenous people. Like for example, if you are living in the village, or if you are in the remote area, or if you see the tribal people, they used to have a own kind of a medicinal language. They used to pass these kind of information by generation and generation, and followed by the generation by generation. So these are the things will helpful. Why? Because they can recover immediately, they don't need the any outside support. Okay, so in the World Bank report also they said that indigenous knowledge referred as the traditional or local language refers to the, it is a large body of knowledge and skill that has been outside the formal education system. Okay, it won't teach by that inside the formal education system and all. It used to be followed by the local people, know how to use the local product. So you can say that it is outside the formal education system and all. So indigenous knowledge always embedded in culture and is unique way to given location and the society at all. Like indigenous knowledge is also a important lives of the poor. Okay, it is basis of the decision making community in food security or human and animal health, education, natural resource management. So many things also used to be there at also. And another way, Flavia, he said that traditional knowledge, that it is a information base for a society. You can say it is a database or information base. So it which facilitates the communication and the decision making, and also it is a dynamic, okay, continuously influenced by the internal creativity and experimentation, as well as with the contacted with the external system also. So based on the above definition, we can say that indigenous knowledge can be concluded that indigenous not only about the past experience of the community, but also it allows it helps the community to make a decision what to do and what not to do. So based upon the past experience, you can say that what to do and what not to do. So that's why that indigenous knowledge is the knowledge that people given community has developed over time and continues to develop. It is based on the experience and often tested century used to adapt a local culture environment dynamic and changing and also. So
these are these, like for example in that brief about the indigenous knowledge and all. Now we are going to look into that, how the indigenous knowledge will help in the disaster risk reduction. This always, you know, that the traditional knowledge helps to reduce the disaster risk. Okay, it always obvious that local people know their land and environment thoroughly well. So it is a unique, local people know their land and know their environment thoroughly well. That's why if you go to the any field work, we used to make participatory rural price, or if you take any technique, that's why you always used to make plan according with the local population, so that they know their land and the environment thoroughly well. They have a unique ability through traditional wisdom and to get and store the information on the natural disaster and how they are exposed also. So whenever the disaster comes, that local people are the, okay, local people can manage the disaster management in a proper way at all. If you look into that recently, that Sendai framework in 2015 to 30 stated that to achieve disaster risk reduction at the global and regional level, it requires a multi-hazard approach. Okay, that Sunday disaster risk reduction, they have a targeted is that 2015 to 13 they have to achieve the disaster risk reduction at the global and the regional level. Okay, they said that you need a multi-hazard approach. You should not go by disaster, earthquake. You should not go by the flood. Should not go by the cyclone. You need a multi-hazard approach and inclusive risk-informed decision making. So based on the open exchange, disaggregated data, like for example, including sex, age, disability, as well as easily accessible, computed, comprehensible, science-based, non-sensitive risk information, based complemented by the traditional knowledge. For example, if you take that, what do you mean by that database? Like for example, if you go to any village, that village is just close by the coastal area. Okay, it used to continuously affected by the cyclone, flood, tsunami, and various disaster and all. So now if you have a data like this, you know, that disaggregated data, like including by sex, how many male and female are there, age wise, and if you have how many disabled people are there, how many women people are there, how many pregnant women are there, how many children are there, how many newborns babies are, if you have a lot of data, then you can usually when the disaster comes, you can give importance to the those section people only. That's why this says that combining the traditional knowledge with the scientific expertise is the more relevant in the cultural context. Earlier we used to say traditional knowledge is the outside of the formal education. Now what we are saying that we have to be traditional knowledge with scientific expertise. So that's why it used to be more relevant in the current context and all. So knowing and documenting the traditional knowledge is not effective unless and until if it is not included in the disaster risk reduction activity. Okay, knowing doesn't matter, you have to include in the disaster risk reduction activity. So it is the entry point of people participation at the grassroots level. Okay, so we always used to say, earlier we used to say government, now we are saying governance, now we are saying that people participation. So how do people can participate in those activities? So include their knowledge, include their beliefs, include their culture. That is what that SFDR Sendai framework says, that it is the entry point for the entry point of people participation at the grassroots level. And this report also suggests that if you want to understand disaster risk at the national and local level, it is important to ensure that the use of traditional, indigenous, local knowledge and practices, it should be appropriate, and it should complement to the scientific knowledge in disaster risk assessment and the development and implementation of policies, strategies, programs, specific sector and cross sector approach, and it should be tailored into the localities to the context. So without localities, without local knowledge, it would be null and void only. That the same way to support these things, that Pan American Health Organization suggested that some kind of a indigenous knowledge, why indigenous knowledge has to be included in the disaster risk reduction activity. Here they said that securing the input of indigenous knowledge and the cultural and environmental knowledge in the development and implementation of the government disaster risk reduction plan. You have to get an input from the indigenous people in when you are making when the government making the
disaster risk reduction plans, and integrating the indigenous perspective into government disaster plans. That that way, that how climate change is contributing to the increased risk and all. And and considering how infrastructure development and climate change impact the vulnerability of indigenous people. So when you are included, that you can see that how the, like for example, if you look into the 10 years before, how our infrastructure development, now what we are doing, so how this infrastructure development is and climate change impact the disaster vulnerability of indigenous people. And if you have a collaborating indigenous people in the design and implementation of the early warning system, in order to ensure linguistic and cultural perspective, and encouraging indigenous people develop with the participation of the entire community, their own community level preparedness and the risk reduction plan strategies that include like actionable community contingency plan to protect lives, livelihoods and the critical infrastructure. Earlier, we used to have a national level plan, state level plan, district level plan, and the block level plan, and the village level plan. If the community has a own plan, so like for example, when the disaster comes, who is going to be protect, who is going to be save from the water, who is going to save, protect the village. There are so many things are there. If they have a, that's what they used to say. If you have a actionable contingency plan, okay, instead of theoretical, you should need a actionable contingency plan and all. If you have that, then it would be a proper it will lead to a proper implementation. And also we have seen about what is traditional knowledge and how the disaster risk reduction and indigenous knowledge. Now we are going to see about the types of indigenous knowledge. There are three types of knowledge is there. One is the technical knowledge, another one is the economic knowledge, and then is the environmental knowledge. In the technical knowledge, you can say that the indigenous people use their technical knowledge gained over the years to address some of the concerns related to disaster risk reduction. Like for example, you can say for instance, the traditional practices of the community are still in existence with respect to construction of houses, infrastructure in the flood inundated areas and coastal region and the mountain region. For example, you can say that during Uttarkasi earthquake in 1991, the damage was visible. Most of the traditional structured house still could survive even after the disaster also. The same way it happened in Kashmir region, also known as that earthquake resistant construction techniques, that is the tax system and Daji Diwari system. So these kind of a system also survived during 2005 Kashmir earthquake also. So incorporating such kind of a technical knowledge and encouraging participation of community members in the disaster preparedness improve the sustainability. Another one is the economic knowledge. So the other type of indigenous knowledge is the economic knowledge. For example, people used to come up with the economic ideas to address the issues in a temporary basis. For instance, you can say that construction of temporary and permanent shelter by the community with the locally available materials, okay, during and post disaster phase also. Like for example, otherwise what they will do, they will bring the lead sheet or iron sheet from the outside. So instead of that, if you using locally available material, it would be economically it will increase the economic efficiency also. So the low cost strategy is planned using local resources by the community. Similar, the community adopt themselves also alternative livelihood during the disaster situation and all. So another thing is the environmental knowledge. Like environmental knowledge, that which is something sensed by the community, even based the minute minor or minute interference, they get the environment or surrounding. For example, that language which is based upon the experiences during cyclones and floods. On the basis of the color of the water, clouds, people used to predict and warn the community member. Now also, if you go to the village, they used to say the that wind color has been changed, so anytime you may get the rain. And also it used to help the community members to do preparedness measures like storing food, firewood, and saving district drinking water and fodder for cattle. So many things used to be there. So these are the things used to be comes under the environmental knowledge. Now we are moving to that how the indigenous knowledge helps and the early warning system and all. If you want to have a proper, if you want to reduce a risk or prepare for effective response, early warning system is plays a major role.
Okay, nowadays we can say that we are technically advanced due to the social media. We get to know the information and everywhere. But to if you want to reduce or prepare for effective response, that proper that warning system is more important. In olden times, people used to sense that cyclones through certain indicator, like preparation has to be taken by the community people through the traditional knowledge. But however, mostly people that used to ignore the native knowledge, mostly that indigenous knowledge indicator proved to be trying paying to such warning to save the community from the great disaster also. In this some of the uh, in this slide I have shown some of the indigenous knowledge, how it helped in disaster time, like weather patterns. It used to sky used to be turned gloomy and overcast, that black rolls of cloud, and used to be weather casually hot and humid. And if you go to the sea and river, it used to get the lot of like a big waves and dark drills of water, and used to get a sound and go smoky cloud shapes. These also used to be there. Sometimes people used to say animal behavior also. Cattle become restless and stop eating grass. Cattle and dogs continuously hide, and ant used to go ant climb trees with the eggs, and the other you can say bending trees. So there are so many knowledge things also there. When you are that when you are mix up with when you are using these knowledge, when you are making a disaster risk plan, then it would be totally sustainable also. Now we are moving into that indigenous knowledge and the coping strategies and all. Normally traditional knowledge of the community, that has always been the guiding force for the community member to develop their own coping mechanism for the different disaster faced them. For example, people are living in a cyclone prone areas or frequent earthquake areas, landslide, etc. It used to happen on a regular basis. So based on the inference from the down to the nature, they resort to the coping strategy. For example, people living in coastal areas are aware of the timing of the rising tides, and so that they used to avoid the fishing and also. So though useful and very that intelligent strategies evolved by the community. So there is hardly any documentation of the traditional knowledge, wisdom, coping mechanism, strategies and all. So it is very important to document such a strategy that will supplement with the scientific facts, thus pass it on a large community to adherence. And also, like for example, if you take into the during cyclone and floods, people wrap up all available seeds, rice, paddy and bury into the under the ground. They move into the safer place. Some families, what they will do, they wrap all the around important papers, document, valuables and bury it under the ground before leaving their place. Houses are constructed in a higher plains whereby that water cannot enter the houses and all. And if the clouds are moved into the north, there is an indication that there will be floods in the 3 to 4 days also. So these kind of things they can do it during floods and cyclone. If you look into the drought, when the drought used to happen, like the droughts are unlike other floods and cyclone. Droughts are not earthquake, landslide, tsunami like a disaster. Okay, but they create a pressure on the society in the name of malnutrition, food shortage and ill health. That's what that drought used to do. So the reason behind the drought is the low rainfall and high soil moisture stress. Sometimes prolonged droughts will lead to the famine and situation. And also, so in this kind of a situation, what you have to do is that the nomadics of Gujarat construct the virdas, which serves as the means of our water harvesting. And that kundis from the Rajasthan are unique structure that look like a huge concrete sources on the landscape, and who is found in Bikaner and Salmar. So these were the kacha structure used to help the people to store the water and all. And also Rajasthan has had a raparts and tobas, and the spiti area of Himachal Pradesh have been totally depend on the diversion of channel cools for irrigations. And if you take that Kasis used to practice bamboo drip irrigation system, Maharashtra had a pod system, and Bihar had a ahar and pines, and Palliyals are steam diversions were common in Kerala also. These are the local technology used to be followed during drought situation and all. So totally indigenous knowledge or traditional knowledge community is laden with rich values and information on a potential disaster which is about to happen.
So, indigenous knowledge, as discussed in this session, is the ability of community to sense possible disaster, which the inference is drawn from the nature through various indication, and it is to be passed through generation by generation. If you give attention to the voices of the experience of the indigenous community is very important. Also, if we give importance, then we can safeguard the people from the disaster and all. So, indigenous knowledge is not only give indication of early warning about a disaster, but it also helpful know the coping strategies to adapt or the deal with the disaster situation and all. So thank you all student, thanks a lot for listening. In this different session we will learn about in a different manner. Thank you. पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं। इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में हैं हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज़, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं। अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं या अपशिष्ट से जुड़ी हुई परामर्श सेवाएं, अनुसंधान या विकास कार्य करते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण और इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है, या अधिक से अधिक आप इसे 2 साल के अंतराल पर भी पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल है "18th Century India, a debate." Today we are discussing BHIC 112's one of the component, that is 18th century debate. When we say 18th century debate, what do we mean by that? And why it is important to discuss something called 18th century? Let me begin with that and then we'll elaborate on the components of this debate. 18th century, which means 1701 to 1799. This is an era, especially in India, when Mughals decline and
the centrality of the Mughal Empire diminishes. Regional polities emerge. Along with that, we also witness or see presence of or the growing presence or the domination of the European trading companies and its implication on the Indian economy. We'll be discussing that subsequently. यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी को लेकर के हिंदुस्तान में या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है क्यों इसको एक डिबेट का विषय माना जाता है. हिस्ट्री में इसके ऊपर एक लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है इस पीरियड की हिस्ट्री लिखने में, उसकी बहस को लेकर के, उसको समझने के तरीकों को लेकर के. सो दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी रिच हिस्टोरियोग्राफी फॉर दिस पीरियड. सो विल बी डिस्कसिंग ब्रीफली ऑन ऑफ दैट ऑल्सो. मतलब विल बी मेंशनिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दैट हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशंस फॉर द 18th सेंचुरी. बट जब हम लोग कहते हैं कि 18th सेंचुरी डिबेट और द ट्रांजिशंस, देन व्हाट वी मीन बाय दैट. एक उसका पहलू है जिसको हम लोग पॉलिटिकली डील करना चाहते हैं. दिस इज अनदर पहलू विच इज इकोनॉमिक और द इकोनॉमिक ट्रांजिशंस. सो लेट मी बिगिन विद द पॉलिटिकल चेंजेस एंड देन विल सब्सिक्वेंटली डिस्कस द इकोनॉमिक चेंजेस. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट we cannot segregate economy from polity. I mean, it's very difficult to segregate economy from the polity or polity from the economy. So we will be focusing on the integration or the interconnections of that. When I say the transitions in the economic or political structures, then we mean for the 18th century is the era when Mughals decline, the Mughal Empire declines. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, we have been discussing that, in what ways the Aurangzeb tried to expand Mughal Empire till the almost the tip of the Indian peninsula. He was trying to capture the whole of Deccan and the South India. And I'm not going into details of that. I'm simply suggesting that the Mughal Empire expanded to a great extent. They had lost Kabul and Kandahar, but almost from the boundaries of Afghanistan till deep into south, and from Bengal, a part of Assam, to the Gujarat coast. So all this area was controlled by the Mughals. So जो मुगल डिक्लाइन हो रहा है उसकी वजह से वी सी इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स लाइक मराठास, अवध, हैदराबाद, बंगाल, राजपुताना, सिख, etc. etc. So what is important is, or what is interesting for us for the 18th century is that a centralized empire is collapsing and the regional polities are emerging. It will be erroneous, or it will be wrong to presume that the structures which follow the decline of Mughal Empire, they were of something unique or something very different from the Mughal structure. They more or less followed the structure which Mughals had. The only difference is that rather than having a pan-Indian empire, these are regional empires. So there is a difference in that sense, that the pan-Indian empire is collapsing, though Mughals have not disappeared. Mughals in Delhi, and they continued almost till 1857. So Mughals are available or present in Delhi and adjoining areas. But the other parts, be it Bengal, Rajputana, Hyderabad, Awadh, all these areas gradually separate themselves or they emerge as a independent polities. पॉलिटी का करेक्टर क्या है उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करने जा रहे हैं आपसे, बिकॉज दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि अ सेंट्रलाइज मुगल एम्पायर इज कोलैप्सिंग और इट इज डिसइंटीग्रेटिंग एंड इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय रीजनल पॉलिटिक्स. क्षेत्रीय शक्तियाँ जो इमर्ज कर रही हैं और उनके क्या डायमेंशंस हैं उसके ऊपर बहुत काम हुआ है और हम लोग उसको ब्रीफली मेंशन करेंगे. बट एट द मोमेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वट इज फोकस ऑफ माई डिस्कशन एट द मोमेंट इज दैट along with this, we have transitions in economy, that is growing presence of the European trading power, growing demand for Indian textile and spices because the presence of the European trading companies, a lot is being exchanged between India and Europe. So that transaction is going on, and that transaction is in a way helping the Indian economy also. Not only the trading activities, but also the manufacturing sector is also greatly progressing. Textile is being exported, which means we are producing the raw cotton, and then it is being converted into textile, and that textile is also being exported. So there's a long history, and we'll be discussing that subsequently. But the Indian economy is flourishing because of the presence of or the trading activities with the Europe, and there's a great demand in Europe, and the presence of Portuguese, presence of Dutch, presence of British, presence of French. So all these trading companies are there, and they are gradually penetrating deeper and deeper into the Indian subcontinent. Various parts of, be it Gujarat, South India, Bengal, they are
ग्रेजुअली पेनिट्रेटिंग इनटू द हिंटरलैंड. सो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक ट्रांजिशन की फेज़ में आ रही है. मैं उसकी डिटेल्स अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इन व्हाट वेज द दादी सिस्टम फ्लरिशेस. मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ बिकॉज दैट विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली. बट एट द मोमेंट you should understand कि Indian economy is being gradually integrated to the larger world economy. Along with that, the changes or the demand of the distant land is influencing the production system in India. And the major impact is seen in the 19th century with the colonialism. That is not my concern, and that I'm not going to discuss that. But you should know that this process ultimately culminates into establishment of colonialism and the great integration with the world economy. I'm not discussing, but you should keep in mind that the continuation leads to that point. And because of this, there is a diversification and intensification of agrarian production. Means जो agriculture that is being expanded. अलग अलग इलाके में खेती बढ़ रही है. खेती करने के तरीक़ों में बदलाव आ रहा है. स्पेशली इरिगेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और डबल क्रॉपिंग को भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है. वी हैव एविडेंस फ्रॉम राजस्थान. Satish Chandra Sahab has worked on that, and there he has argued that in what ways and in a very forcefully, state is supporting इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर. वो इलाके जो अब तक खेती में इन्वॉल्व नहीं थे वहाँ खेती की जा रही है और खेती का एक्सपेंशन हो रहा है. एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट that I'm going to discuss, and it is also being used or being demanded by the European trading companies. So Indian economy में भी change आ रहा है and which is reflecting or which is also influenced by the political structures. So ये continuum continues. हम लोग पहले डिस्कस करते रहे हैं और उसको अभी थोड़ा सा इलेबरेटली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. दैट इज दिस 18th century has been discussed by the historians in multiple ways. One is that the empire-centric approach. In what ways the 18th century can be examined by keeping Mughals at the center of the argument, or the decline of Mughal. Even in the decline, you are focusing on the Mughal. So that is the empire-centric or Mughal-centric approach. Then we also have the region-centric approach, the emergence of regional polities, and in what ways that marks the transition or change from the empire-centric approach. So we'll be discussing that. But when we say the empire-centric approach, in that we need to understand and examine in what ways and what are the causes which leads to the decline and disintegration of the Mughal Empire. I am using both the term decline and disintegration. Disintegration in the sense that it disintegrates into various its own components. Awadh is part of Mughal Empire, Bengal to a great extent, Hyderabad. They all were subedari of the Mughals, and then they gradually separate themselves. So it is being disintegrated. And there is also emergence of the regional polities. Though Rajputs were part of the larger Mughal Empire, but they retain their exclusive character because of the Watan Jagir. So वो एक अलग तरीके से इमर्ज करते नजर आते हैं. So there are varieties of regional polities which emerge. So when we focus on them, then the 18th century can be seen in a different light, from a different perspective. Empire centric के अंदर we need to examine in what ways Mughal empire collapses. What are the internal reasons, or what are the reasons which are part of the Mughal structure? External forces I'm not discussing at the moment. What are the internal factors which lead to the collapse of the decline of the Mughal Empire? अगर हम उसकी बात करना चाहते हैं और उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं तो ये बात समझ में आनी शुरू होती है कि जो मुगल एम्पायर है वो मुगल एम्पायर कोलैप्स कर रहा है अपने वेट से. मतलब इट इज़ कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट. हाउ टू एक्सप्लेन दैट? उसके लिए मैं एक शब्द आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ मिलिट्री फिस्कल स्टेट. मिलिट्री फिस्कल स्टेट. मुगल एम्पायर, मैंने पहले भी आप लोगों से बातचीत की और मैं इस पर डिस्कशन करता रहा हूँ आप लोगों से कि किस तरीके से मुगल एम्पायर का कैरेक्टर था मिलिट्री बेस्ड. आपने मनसबदारी सिस्टम पढ़ा है, आपने जागीरदारी सिस्टम पढ़ा है. उस पूरे सिस्टम के अंदर द फोकस इज ऑन द मिलिट्री एस्पेक्ट, द मिलिट्री पावर ऑफ द स्टेट. गन पाउडर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बट दैट इज पार्ट ऑफ द लार्जर military apparatus of the Mughals. So it is military empire for which the revenue is being extracted. So military fiscal empire कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको वसूलने के लिए यूनिट दी आर्मी, एंड द आर्मी इज बीइंग मेंटेन फ्रॉम द रेवेन्यू विच इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड. सो देयर इज अ म्यूचुअलिटी या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है दोनों की कि किस तरीके से
स्टेट जो है वो रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड रेवेन्यू इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू the political apparatus, which I call the Mughal nobility or the Jagirdari or the Mansabdari. I'm using them in terms of parallel words, but they have different connotation, and you are aware of that. The Jagirs, all the Mansabdars are not Jagirdars, but all the Jagirdars are Mansabdars. ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे जागीरदार जो हैं वो प्राइमरीली मनसबदार हैं. जिन मनसबदारों को रेवेन्यू असाइनमेंट दिया गया है कि इस भूमि से होने वाली आय आपकी आय हो जाएगी, वो जागीरदार कहला रहे हैं, और जिनको कैश में पे किया जा रहा है वो नकदी मनसबदार कहला रहे हैं. सो ऑल द जागीरदार आर मनसबदार, बट ऑल द मनसबदार आर नॉट जागीरदार. सारे मनसबदारों को जागीर नहीं मिलती है. बट आइदर वे, चाहे हम मनसबदार की बात करें, चाहे हम जागीरदार की बात करें, हम जागीरदारी को डिफाइन करते हैं, पहले भी मैंने आपसे बातचीत की, जात और सवार से, कि they have the component of Jat and Savar. Jat is their personal rank, and Savar the number of contingent they are supposed to maintain. And theoretically, at least theoretically, everybody who is part of the Mansabdari system has to be equipped with the Jat and Savar. मतलब उनको सवार मेंटेन करना ज़रूरी है, ऐसा theoretically माना जाता है, but there are exceptions also. When we say the contingent or the Savar they are maintaining, it is what we call the military apparatus. कि जो भी मुगल नोबिलिटी का हिस्सा बन रहा है, मुगल मनसबदारी का हिस्सा बन रहा है, उसकी इनकम को दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं. एक उसकी पर्सनल इनकम जो उसके जात से डिफाइन हो रही है, और एक द नंबर ऑफ हॉर्सेज और द नंबर ऑफ कंटिजेंट विच ही इज और शी इज नॉट शी विच ही इज सपोज टू मेंटेन. दैट नंबर, उस पर जो खर्चा आ रहा है, उन सवालों को मेंटेन करने पे जो खर्चा आ रहा है, वो और उसकी पर्सनल इनकम जो है उसको मिला करके उसको रेवेन्यू असाइनमेंट दिया जाता है, तो जागीरदार कहला रहा है. नगद में पे किया जा रहा है तो नकदी मनसबदार कहला रहा है. बट रेवेन्यू इज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द मिलिट्री अपरेटस, विच मीन्स कि मिलिट्री फिजिकल अंपायर. अब इस सिस्टम को आप जब मनसबदारी सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रक्चर है, या जिसके सहारे वो फंक्शनल शक्ल पा रहा है, दैट इज़ जागीरदारी. कि अलग अलग इलाकों के अंदर जागीरदार अपॉइंट किए जा रहे हैं, और वो जागीरदार उस इलाके से होने वाला जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या जो वहाँ रेवेन्यू मिल रहा है, उस रेवेन्यू का वो हिस्सा जो स्टेट तक आना है उसको जागीरदार वसूल रहे हैं. मतलब जागीरदार आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट who are placed in the various part of the empire where they are supposed to collect the revenue which is due to the state. अब ये जो प्रोसेस है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी समझाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग है, जब इसकी फंक्शनिंग कोलैप्स करती है, इसकी फंक्शनिंग में कंट्राडिक्शंस आने शुरू होते हैं, और उन कंट्राडिक्शंस को मुगल अंपायर, मुगल स्टेट एड्रेस नहीं कर पाता है या प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं कर पाता है, दैट लीड्स टू द क्राइसिस इन द जागीरदारी स्ट्रक्चर. एंड देयर इज अ हिस्टोग्राफी ऑन दैट, इन व्हाट वेज जागीरदारी क्राइसिस इज a very important factor in the decline of the Mughal Empire. There is a parallel theory which is called as agrarian crisis. Irfan Habib has proposed that कि there is agrarian crisis. Agrarian crisis को भी वो जोड़ते हैं मुगल स्टेट के इसी एपरेटस से, कि जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होने की वजह से, बहुत ज़्यादा शोषण करने की वजह से, इट लीड्स टू दी over exploitation of the peasantry, which forces peasantry to migrate or stop cultivation. भाग जाएं अपने इलाके से, पलायन कर जाएं, या प्रोटेस्ट के रूप में कल्टीवेशन को रोकें, या उसको कम करने की कोशिश करें, या उसको बंद करने की कोशिश करें, which leads to ultimately decline in the revenue due to the state. जब एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होगा, तो एग्रीकल्चर में डिक्लाइन की वजह से जो इनकम स्टेट के पास आनी चाहिए उसके ऊपर असर पड़ेगा, एंड इनकम विल डिक्लाइन. सो अल्टीमेटली इट इज द क्राइसिस इन द एग्रीरियन स्ट्रक्चर विच लीड्स टू द डिक्लाइन ऑफ द empire, and we'll be discussing in details of that. And then there is a revisionist school, there is a revisit of the crisis, when we call it the agrarian crisis. So there is a revisit of that crisis, and that revisit is also in terms of the जागीरदारी crisis. कि क्या जागीरदारी crisis का वही करेक्टर है जिस करेक्टर के रूप में सतीश चंद्रा साहब ने शुरू में प्रपोज किया था, और there are nuances of it and there are shades of it. तो ये बहस हिस्टोग्राफिकली उस रूप में चलती है. मतलब मुगल अंपायर सेंट्रिक जो हिस्टोरियोग्राफी है, वो हिस्टोरियोग्राफी मुगल स्ट्रक्चर, मुगल रेवेन्यू स्ट्रक्चर, मुगल मिलिट्री फिजिकल स्ट्रक्चर के जो इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं
उनको हाईलाइट करते हुए ये बात आर्ग्यू करने की कोशिश करती है कि मुगल अंपायर की डिक्लाइन की वजह वॉज विद इन दिस स्ट्रक्चर। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ के ऊपर। there is a historiography and there has been a historiography which focused on the rule or on the role of an empire or of the emperor. पर्टिकुलर रूलर का जो गवर्नेंस थी उसको भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, स्पेशली औरंगजेब, कि एम्परर औरंगजेब पॉलिसीज वर सच विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अर्थात rather than discussing their structure, it is the emperor or the ruler centric approach. And politically इसके ऊपर जदूना सरकार का मेजर काम रहा था, इरविन का काम था, who argued in terms of the policies of the emperor leading to the decline of the Mughal empire. But more structural analysis came with the analysis of the socio-politico administrative revenue structure of the Mughal empire, and in what ways the contradictions of the empire leads to the decline of that. And in that series we have the Jagirdari agrarian crisis and then the revisit of the crisis itself. तो जब मैं जागीरदारी क्राइसिस की बात करता हूँ तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि a major component of जागीरदारी क्राइसिस was of जागीरदारी सिस्टम was कि आपको रेवेन्यू असाइन किया जा रहा है, एक खास इलाके से होने वाली इनकम आपकी इनकम बन जा रही है। उसके जो और न्यूएंसेस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे दो आसपा सी आसपा का इशू आ रहा है, कैसे मंथ स्केल इंट्रोड्यूस की जा रही है। मंथ स्केल को इंट्रोड्यूस करने की वजह से कि जो रेवेन्यू साल भर का आना चाहिए वो साल भर का नहीं आ रहा है, उस इलाके से इनकम जो हो रही है वो खाली 6 महीने की हो रही है या 4 महीने की हो रही है या 3 महीने की हो रही है। सो अकॉर्डिंगली जो कंटिजेंट आपको मेंटेन करना है उसका नंबर रिड्यूस किया जा रहा है, अर्थात जो सवार आपको मेंटेन करने हैं उसका नंबर रिड्यूस किया जा रहा है। इफ़ द नंबर ऑफ कंटिजेंट इज बीइंग रिड्यूस, सो अल्टीमेटली मुगल पावर, मुगल जो मिलिट्री है उसका नंबर भी डिक्लाइन कर रहा है, कम हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री इन दैट सेंस कि जो जागीरदारी सिस्टम है वो जागीरदारी सिस्टम किस तरीके से विद इन द सिस्टम जो रेवेन्यू असाइनमेंट से या रेवेन्यू अप्रोप्रिएशन से जो उसके संबंध रहे हैं, जो उसका कनेक्शन रहा है, उसमें जब फ्रिक्शन हो रहा है या जब उसके जो कंट्राडिक्शंस है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी वजह से जागीरदारी क्राइसिस नजर आनी शुरू होती है। उसका जो लार्जर आर्ग्यूमेंट सतीश चंद्रा साहब देते हैं इनिशियली, बाद में उसको मॉडिफाई भी करते हैं, बट इनिशियली व्हाट ही सजेस्ट इज दैट कि इट इज द पॉलिसी ऑफ और द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ जागीरदार from one place to another is very crucial in undermining the functioning of the जागीरदारी system. इसके दोनों पहलू आपके सामने आते हैं। एक पहलू ये डर स्टेट को है कि अगर एक जागीरदार को एक इलाके में बहुत समय तक रहने दिया सो वो लोकल रूट्स डेवलप कर लेगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट, विच मीन्स द जागीरदार who is placed in Punjab or in Bengal or in Awadh or in Hyderabad might develop the local roots with the local regional political configurations and might revolt against the empire. So it's always a possibility, which means that is why it is necessary to keep on transferring that, so that these jagirdars should not be able to develop the long-term relations with the local regional possibilities or the potential चैलेंजर्स। सो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र सुनने में जितना आसान है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ट्रांसफ़र सुनने में जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह ये है कि आपने उस इलाके से होने वाली इनकम या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो आपने उस आदमी को असाइन किया हुआ है। अब इशू ये है कि जब आपने उसको बीच में ट्रांसफ़र कर दिया तो वो अपना इनकम कहाँ से रिसीव करेगा, क्योंकि अभी तो खेती हुई नहीं है या खेती अभी प्रोसेस में है। जब फसल तैयार होगी, कैलकुलेशन होगा, उसके बाद वसूली जाएगी और तब वो जागीरदार के पास आएगी, जो एक खास समय पे होता है। जब फसल तैयार हो गई उसके बाद ही वो काम हो पा रहा है। लेकिन आप ट्रांसफ़र तो किसी वक्त भी कर दे रहे हैं, तो वो इनकम किसकी मानी जाएगी, जो गया उसकी या जो आएगा, कौन वसूलेगा। देयर इज अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी, जो सेंट्रलाइज दीवान के कंट्रोल से मशीनरी एग्जिस्ट करती है, दैट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो इंश्योर कर रही है कि कितना यहाँ से वसूला जा रहा है। जो अभी तक इनकम्बेंटेड थे उनको इतना मिल जाएगा और जो दूसरे आ रहे हैं उनको इतना मिल जाएगा। तो वो जो प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। अब इसी को दूसरे रूप से मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी
कि एक जागीरदार को यू हैव प्लेस्ड इन अवध एरिया, बट ही इज फाइटिंग इन सम अदर एरिया, और ही इज पोस्टेड एट सम अदर प्लेस, which means he is deputed to some other place. My revenue assignment may be in Bengal, but I may be given assignment or the control of the Suba of Awadh or the Suba of the Dakhan or Gujarat, which means मैं जहाँ से मुझे इनकम मिलनी है मैं वहाँ के ऊपर उपलब्ध नहीं हूँ. So I have to request my officials or at times the financiers of that area, मतलब उस इलाके में जो बड़े महाजन हैं उनको मैंने ये अधिकार दे दिया कि यहाँ से होने वाली रेवेन्यू की इनकम को आप ले लीजिएगा और उसके पहले आप मुझे वहाँ से एडवांस में पैसा दे दीजिए जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ. विच मीन्स जो वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि जो आपका जामा बताया गया, जो एक्सपेक्टेड इनकम है, इट मे नॉट करस्पॉन्ड विद द हासिल विच इज़ एक्चुअल इनकम. मतलब जो कलेक्शन हो रहा है और जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसमें हमेशा गैप रहा है. एक्सपेक्टेड इनकम हमेशा कम रही है और जो एक्सपेक्टेड इनकम हमेशा ज़्यादा रही है और जो एक्चुअल कलेक्शन है वो हमेशा कम रहा है. तो देयर हैज़ बीन अ गैप. उसी गैप को एडजस्ट करने के लिए कभी आपने मंथ स्केल देखा था या कभी आपने देखा था दुआसपा सियासपा में कैसे नंबर रिड्यूस करके आप उसको उस ब्रिज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. बट यहाँ जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दैट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र जागीरदार इज़ नॉट श्योर कि वो कब तक इस इलाके में रहेगा. And that is why he is not concerned about the region also, of that area also. He knows he is going to be transferred. So he has no hesitation in exploiting the peasantry in collaboration with the local element. Excuse me. लोकल एलिमेंट्स के संग मिल करके वो एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है और एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है. बिकॉज ही नोज ही हैज़ नो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन दैट एरिया. ही विल बी ट्रांसफर्ड, which leads to the exploitation of the peasantry. At times, Jagirdar and the Zamindar are in collaborations. At times, Jagirdar and Zamindar are not in collaboration. So, वहाँ conflict का character अलग हो जाता है. But this is given in the structure of the Jagirdari system कि आप crisis को जन्म दे रहे हैं. आपने long term interest develop ना करने देने की वजह से in your attempt to, in your effort to eliminate the possibility of long-term association between the Jagirdar and the local possibilities or local regional political powers, what you are doing, you are undermining or you are curtailing the long-term interest of the Jagirdar in that area, which leads to over-exploitation of that area. Subsequently इसको हम लोग इजारादारी भी कहते हैं. उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, I'm not going to discuss the इजारादारी, but that is the revenue farming, कि उस इलाके से रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार महाजन को दे दिया गया और महाजन से लमसम पैसा ले लिया गया. And then the महाजन is free to exploit the peasantry of that area. इस डिबेट को अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ आपसे तो अथर अली मेड another important contribution in the debate, and he says that, and he introduces another dimension to this debate कि जो मुगल अंपायर का एक्सपेंशन विद द औरंगजेब स्पेशली इन द डेक्कन हो रहा है, वहाँ के ऊपर ये जो मिलिट्री फिजिकल स्टेट है इसकी कंट्रडिक्शंस बिकम ऑल द मोर प्रोमिनेंट. इन व्हाट सेंस? व्हाट हैपेंस कि जो मराठा का बहुत बड़ा इलाका है वो इलाका उतना फर्टाइल नहीं है. अनलाइक द इंडो गैंजेटिक दोआब और द एरिया ऑफ गुजरात विच इज़ वेरी फर्टाइल, और द एरिया ऑफ बंगाल विच इज़ वेरी फर्टाइल. जो डेक्कन का मेजर इलाका है वो डेक्कन का मेजर इलाका पठार है. इट्स अ प्लेटू एरिया. सो वहाँ के ऊपर एग्रीन प्रोडक्शन उस रूप में नहीं हो पा रहा है. सो द इनकम इज नॉट कमिंग बट यू आर इंक्रीजिंग योर एक्सपेंडिचर. Income is being reduced and the expenditure is increasing because you are continuously in the campaign mode, and the campaign needs amount or the capital or the money which is not being recovered from that area because the area is being doesn't have the sufficient ingredient production to sustain this kind of expansion. एक और चीज़ जो हो रही है अथर अली को लेकर के, he says that the local regional nobles or nobility is being becoming part of the Mughal mansabdari system or the Jagirdari system, which is increasing the pressure on already depleted resources of the empire. एक्सपेंशन हो रहा है, उस इलाके में एक्सपेंशन हो रहा है जहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आ रही है, बट वहाँ के लोकल रीजनल पॉलिटिकल
aspirants को you are giving a space in the Mughal nobility. So your expenditure is increasing, but your income is not increasing. So there's a contradiction in that. So Athar Ali इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, which leads to the बेजागीरदारी, कि आपको जागीर ही नहीं मिल रही है. जागीर इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि उस इलाके से उतनी इनकम ही नहीं हो रही जितनी इनकम आपकी सैलरी, आपकी जो जात है और जो आपका सवार का इनकम है, जो एक्सपेंडिचर उसको मैच कर पाए. सो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द जामा एंड द हासिल, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. अनदर थिंग विच ही आर्ग्यूज दैट कि जो खालसा लैंड है दैट इज बीइंग एक्सपेंडेड, मतलब द लैंड विच बिलोंग्स टू द स्टेट डायरेक्टली और द एम्परर, जहाँ से होने वाली इनकम सीधे स्टेट तक जाती है, दैट इज बीइंग इंक्रीज. सो देयर इज अ डबल प्रेशर ऑन द सिस्टम. जो इनकम हो सकती है दैट इज बीइंग कॉर्नर बाय द एम्परर, और नंबर ऑफ मनसबदार्स आर बीइंग इंक्रीज्ड. सो जो मुगल अंपायर कोई जो स्ट्रक्चर है उसकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, दैट लीड्स टू द डिक्लाइन और द कोलैप्स ऑफ द मुगल अंपायर. इसी को और ज़्यादा थोड़ा रिफाइन करते हैं सतीश चंद्रा when he revisits his argument, and then he says that Satish Chandra साहब कहते हैं कि नहीं, it's the inner contradictions which also play a very important role, and the gap between Jama and Hasil. मैं इस डिबेट के ऊपर आपसे आगे बात करूंगा अपने नेक्स्ट हिस्से में और द नेक्स्ट एपिसोड में. At the moment, let me conclude by saying that Nurul Hasan also makes a very important argument in that sense. He says that the role of zamindar should also be examined. कि जो जमींदार्स का रोल है दैट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड, एग्जामिन्ड, शुड बी एग्जामिन्ड, बिकॉज दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंटिन्यूएंस, मेंटेनेंस और कोलैप्स ऑफ द मुगल अंपायर. जहाँ के ऊपर जमींदार्स और जागीरदार के बीच में कोलैबोरेशन हो जाता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल अंपायर, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल अंपायर. इन न्यूएंसेस को वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन. एट द मोमेंट लेट मी कंक्लूड बाय सजेस्टिंग the course which we have shared with you, BHIC 112 or EHI 04, deals with this section, and Satish Chandra's Indian Ocean in the 17th Century to examine the European trading companies. Also, you can see the Cambridge Economic History of India, Volume 1. So, the 18th century debate should be located not only in terms of the decline of the Mughals, but the emergence of regional polities and the transitions in the economic structure. Thank you very much.